Welcome learners. Data is all around us and we use it in our daily life. For example, to buy a vehicle, we collect the information and we do so by the help of observation, by measurement, or by research, or by analysis. So, data is nothing but it is the collection of information by the help of measurement or by observation or by research or by analysis. And there are two types of data. One is quantitative data and other is qualitative data. Today we are going to deal with quantitative data. I am Dr. Neel Kamal Saran, Faculty School of Education, and I am here with the topic Quantitative Data Analysis Basics. This topic is going to be helpful for the students who are doing MA in education or MEd, or the students who are pursuing their PhD. So let us see what is quantitative data. Quantitative data, often in our daily life we come across the questions like how much, how many faces are there in a cuboid, or how many papers do you need to take the printout, how much time do you need to complete the task, or how often do you go to movie. So when we search for the answer of these questions, you will see that you will get the answer in terms of quantity, in terms of certain numbers. So the informations which can be quantified is quantitative data. It is the data which can be counted or measured or can be given a numerical value. And usually there are measurement units associated with quantitative data. Not necessary all the time, but usually there are measurement units are associated with quantitative data. We can apply arithmetic operations to quantitative data. For example, we measure the height in terms of feet or centimeters, age of a person in years, a glass contains 250 ml of water, number of students who are watching the video, and temperature at a particular time and place. All these are examples of quantitative data which we come across in our daily life. Now let us see the categories of quantitative data. Basically, there are two categories of quantitative data. First one is the data which we collect in the form of measurement of something or counts or calculation. And another one is quantification of qualitative data. Sometimes what we do, we collect the information in terms of words, and what we do is we turn or we convert the data which we have gathered in terms of words into numbers. Like for example, suppose one seminar is going on and you want to know the feeling of the persons about the seminar. So what we do, we collect the information about the feeling of the persons about the seminar which is going on, and we divide their feelings into certain themes. And suppose we divide it into three types of theme. First one is the seminar was very effective. Second is suppose it was an average. And third one is it was not at all effective. Then what we do is we find out the percentage of people who feel that the seminar was very effective, and percentage of people who feel that it was an average effective seminar, and we find out the percentage of people who feel that it was not at all an effective seminar. So what we have done, we have quantified the qualitative data. The data which we have gathered in terms of words, we have converted those data into numbers. Next is types of quantitative data. There are two types of quantitative data.
First one is discrete data and another is continuous data. Let us see what is discrete data. Discrete data means data which can take a particular value. The data which takes only whole number or integer value, not a fraction value, and it cannot be broken into further small parts. For example, number of children in a household. So can we say that number of children, 4.5 number of children are present in a household? We can't say that. Number of children present in a house will be either 4 or 5 or 6, but it can't be 4.5 or 4.2. So discrete data is, we cannot break the data into further smaller part. Next is continuous data, means the data which is in continuity. We can break down it into further smaller part. And the second important thing about continuous data is it fluctuates over time and it takes any value because it is a continuous data, so it takes any value. For example, height of a person. It can be 167 centimeters or 167.2 centimeters, like this. Weight of a person can be 65 kg or 65.7 kg. So this is continuous data where the data can be broken into smaller parts and it can take a fraction value also. There are two types of continuous data also. First one is interval data, means data which is measured along a continuous scale which has equal intervals. Like you can see on the screen, there is one scale where there is continuous intervals, and you will find that the distance between 0 and 1 is same as the distance between 1 and 2, is same as the distance between -1 and -2. But there is no true zero in case of interval data. Now what does it means that there is no true zero? No true zero means, suppose the temperature of a place is 0 degrees Celsius. Now if 0 degrees Celsius doesn't mean that the place is not cold or not hot. So zero has some meaning there. And like for example, you can take another example. Suppose CQ, creative quotient of a person is 0. That doesn't mean that the person is 0% creative. Okay. So this is interval data which has no true zero, though the scale has equal intervals, but it has no true zero. Next one is ratio data. Ratio data has all the features of interval data and a true zero, means you can see the in equal intervals. The distance between 0 and 1 is same as the distance between 1 and 2. It is same as the distance between 2 and 3. But there is a true zero, which means that 0 means there is total absence of the variable. For example, a person scores 0 in a test of mathematics. That means his score is 0. He has got 0 marks in the test of mathematics. So here in the case of ratio data, we have true zero. And another important thing is that in ratio data never falls below 0. It will lie between 0 and above. For example, height of a person, it can't be 0. It lies between 0 and above. Weight of a person, it lies between 0 and above. Whereas in interval data, the data lies, it can fall below 0 also. So that's why I have shown in the figure that it lies below 0, -1 and -2. I have shown it in the scale also. Next is nature of
quantitative data. As we have seen that quantitative data are the informations which can be quantified, it can be counted, it can be measured. So it is mathematical in nature. We can apply mathematical arithmetic operations. We can statistically analyze those data. So it is mathematical in nature. We can count the data and measure the data, and it focuses on numeric and unchanging data. Now, let us see the importance of quantitative data. Collection and analysis of data is quick and easy uh, in case of quantitative data. Like we can calculate or we can gather 600 data in one go. We can prepare a questionnaire and distribute the questionnaire, and we'll get 600 data at a time. So it is quick and easy. It takes less amount of time at it takes in case of qualitative data. Second important thing is it helps in drawing inferences. For example, the scientists, what they do is they draw inferences on the basis of the data which they gather. For example, the number of coronavirus cases in Delhi. What they do is they gather the information. On Monday, what was the number of positive cases? On Tuesday, what was the number of positive cases? Like this, they gather the information, and they prepare or they make hypothesis, and they test the hypothesis, and by using some statistical methods, and by this they draw the inferences about when does the coronavirus will be at its peak, or when does it will come down. So like this, inferences can be drawn with the help of quantitative data. Next important thing is it gives an accurate result. As it is mathematical in nature, we follow mathematical rules and calculations, so it gives accurate result. And here objective results are obtained. No matter who one calculates or who one analyze the data, he or she will get the same result as the another person has got. So we get the objective result, and there is less chance of biasness in case of quantitative data. But there is somewhat more chances are there in case of qualitative data. Some personal feeling may come, but in case of quantitative data, we collect the information in terms of numbers, so there is less chance of biasness. Next is quantitative data sampling methods. Which type of sampling methods can be used to collect the quantitative data? So, probability sampling method, there are 5 types of probability sampling methods. Simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, and multi-stage sampling. So, by using these 5 types of probability sampling methods, we can collect quantitative data. Another one is by using the non-probability sampling methods like convenience sampling, quota sampling, purposive sampling, snowball sampling. By using these 4 types of non-probability sampling methods also, we can collect the quantitative data. Next is data collection tools. What are the tools which will be beneficial for us for collecting quantitative data? First one is questionnaire. It may be an open-ended questionnaire or closed-ended questionnaire. Both types of questionnaires can be used to collect quantitative data.
Next is survey. We can collect quantitative data by using survey. Like census survey, we do a census survey to collect the information about number of persons in a particular household. Person, they go to village and each and every household to collect the data. So census survey, sample survey can be done to collect data from the sample. So by using survey, we can collect quantitative data. By using interview, either it may be face-to-face interview or telephonic interview, we can collect quantitative data by using interview technique also. And we can use structured interview or semi-structured interview or unstructured interview to collect quantitative data. What we do is we quantify the qualitative data. And another method is checklist. By using checklist also we can collect quantitative data. Experiment is one of the tools to collect quantitative data. By experimenting we can collect quantitative data. Observation, controlled observation can be helpful for collecting. It is also a helpful method to collect quantitative data. And document review is one of the important methods to collect quantitative data. Next is quantitative data organization. The data which we collect is in the raw form, unformatted form, unstructured form, but we have to arrange the data so that meaningful inferences can be drawn from the data gathered. If we are not doing so, then the meaningful inferences cannot be drawn from the data which is gathered. So the first thing what we do is we arrange the data in ascending or descending order. And the second thing is we organize the data in categories and prepare a frequency distribution table to show the number of participants in a particular category. For example, suppose we have gathered the marks of 20 students of class 8 in the unit test, and the maximum marks in the unit test was 30. So here you can see on the screen I have collected the marks of 20 students in the unit test. And what was first step is I have arranged the data in ascending order. See, you can see on the screen that 9 is coming 2 times, so I have written 2 times. 12 is coming for the 4 times, means 4 students have got 12 marks out of 30 in the unit test, and 2 students have got 13 marks, 2 have got 14, and 3 students have got 21 marks in the unit test. So you can now we have prepared the categories like the marks 4, 5, 9, the marks which was obtained by the students 4, 5, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 26 and 28. These are the marks which are obtained by the students. And frequency means number of students who have obtained these many marks. Like one student has obtained 4 marks, one student has got 5 marks, 2 students have got 9 marks, 4 have got 12, 2 have got 13 marks, 2 students have got 14 marks, one student has got 19 mark, one has got 20, 3 students have got 21 marks, and one students have got 23, 26 and 28 marks respectively. So total there are 20 number of students. And you can divide it into class intervals also. You can divide the marks into class intervals also. Like 0 to 4, the frequency means number of students. So one student lies between 0 or 4. One students have got marks in between 0 and 4. 3 students have got marks between 5 and 9.
8 students have got marks between 10 to 14, and one have got marks between 15 to 19. 5 students have got marks between 20 to 24, and 2 students have got marks between 25 to 29. Altogether there are 20 students. Now what is the use of this organization of data? By organizing the data, we can easily analyze the data. And second thing is, in future we can reuse the data. So the data organization is very much useful for us. If we want to use it in future, suppose we think that no, we have done some mistakes, so we can reuse data because it is in the arranged form, organized form. So next is analysis of quantitative data. How do we analyze the quantitative data which we have gathered? How can we analyze the data? Now it is think that the students, what they think that the quantitative data can be analyzed only by using the parametric techniques. It can't be analyzed by using non-parametric techniques. However, the basic assumptions of parametric test are the data should be randomly distributed. So if we check that the data is randomly distributed and the data is on interval or ratio scale, and the homogeneity of variances are there, so we can go for parametric test, and test like t-test, ANOVA, ANCOVA, we can go for that. But if the data is not it is the data is not in the form of, means it violates any of the parametric conditions. It is not the data is not normal, and it is not on the interval or ratio scale, and the homogeneity of variances, there is no homogeneity of variances, then in that case we can go for non-parametric test. Like, for example, if we want to find out or compare the difference between means of male and female in their academic achievement, and the data is not normal, it is not on the interval or ratio scale, so we can go for Mann-Whitney U test. Instead of t-test, we can go for Mann-Whitney U test. Similarly, if 3 groups are there, we can go for Kruskal-Wallis U test. So we can analyze quantitative data by using parametric test as well as non-parametric test. And one another important thing is that ethical issues which comes while collecting the quantitative data. First one is the honesty. We should be honest while collecting the quantitative data. Sometimes what people do is they distribute the questionnaire, and even a person who is not filling or returns the questionnaire without filling it, or incompletely, by filling it incompletely, then what the researcher do is he himself or herself complete the questionnaire and use it. So we should not do that in our study. So honesty is very much important while collecting quantitative data. And whereas privacy right is one of the important ethical issues which comes while collecting quantitative data, privacy is the topmost important. We should take the consent of the persons, and we should not share the information, personal information shared by the persons. So these are some of the ethical issues which comes while collecting the quantitative data. So in today's class, we have studied what is quantitative data,
And there are we have also seen the two categories of quantitative data, which is first one is the data which is gathered in measurements, counts or calculation, and another one is quantification of qualitative data. Then we have seen the types of quantitative data, which is discrete data and continuous data. Data which can take a particular value is discrete data, and data which can take any value is continuous data. Again, we have seen that there are two types of continuous data. First one is interval data and second one is ratio data. In interval data, the scale has equal number of intervals, but there is no true zero. But in ratio data, it has all the features of interval scale along with a true zero. We have also seen that the sampling techniques which is beneficial for collecting quantitative data, and we have seen how we can organize the quantitative data and the statistical techniques which are beneficial for analysis of quantitative data, and we have seen some ethical issues which are related to the collection of quantitative data. In the next class, we will study further more about quantitative data. Thank you. In the current global economy and digital era, learn or perish is the order of the day for all adults in all sectors of life. As a result, adult education and lifelong learning have assumed great significance. IGNOU as a national university has played its role by way of coming up with the Master of Arts in Adult Education program, MAAE. MAAE program focuses on different aspects of theory and practice, policies and programs, as well as research, among other things related to adult education. MAE is a 2-year modular program with multiple entry and exit options. Students who complete first year of the program will be awarded with the postgraduate diploma in adult education. In case they want to continue, they will complete the second year program and they will be awarded with the Master of Arts in adult education. MAE program consists of 10 courses, 5 courses in each year, 8 theory courses, 6 credits worth, and 1 practical course of 10 credits in the first year, and 1 dissertation course of 10 credits in the second year. Practical course of MAAE is divided into 3 components, namely community-based practical activities, workshop-based practical activities, and adult education training center or institution-based practical activities. And the student has to complete all the 3 components for completion of this practical course. The minimum qualification required for admission to this program is bachelor's degree from any recognized university. The minimum duration is 2 years and the maximum duration is 4 years. Instructional system follows multimedia approach. The major medium of instruction is self-learning print materials, which is supplemented by other media such as audio-video programs, broadcasting, that is interactive radio counseling, teleconferencing, personal contact programs or counseling sessions at the study centers, workshops and field work, as well as internship at the institutional level. Those who seek out a master's degree in adult education have a myriad of career and specialization options.
they can go further for higher studies, that is research in various fields of adult education, an adult literacy teacher, faculty in university departments of adult and continuing education, extension and lifelong learning. Field functionaries in the projects implemented by state and central governments as well as NGOs. For more details, you can log on to www.ignou.ac.in. Don't forget to take admission. Hello viewers, good afternoon. I welcome you to this special program of Gyan Darshan on this MEG 16 course. The title of the course is Indian Folk Literature, and I have designed that course as a part of our complete MA program, MA English program. You must have seen on our website that we have a modular approach to MA English. So there is a diploma under which this course is a part. So 1 year diploma program, and there is an exit option. And then you join the second year courses, and then you can do a complete MA English program. And you can see the details on our program guide of MA English. I'm not going to give all the details of that. Today I will focus on this particular course, MEG 16, Indian Folk Literature. Introducing myself, I am Professor Nandini Sahu. I am a professor of English in the School of Humanities, Indira Gandhi National Open University. I am a creative writer and a folklorist, and I have been constantly engaged in my research and pedagogy on folk literature since the year 2007. In the year 2007 and 8, I proposed a PG diploma program on folk literature, and it was launched in the year 2009. And there was very overwhelming response of the students for that particular program, and the PG diploma in folklore and culture studies. And in the year 2021, I designed a complete MA program of 64 credits, MA in folklore and culture studies, which is launched from another school, from SOITS. It's a 64 credit program, MA in folklore and culture studies. Having said that, I would again get back to this particular course, MEG 16. This is one block of the course, MEG 16. This is block 3. There are 7 blocks for you under this particular course, which is an elective course for the second year students of MA English. And I'm sure that you are already acquainted with the syllabus of the course, MEG 16. Still, I would just give you a brief idea, a brief overview on the syllabus of this particular course, MEG 16, Indian Folk Literature. There is one block, block 1. It is Folk Literature and Language, Research and Pedagogy. In this particular block, we talk about the research and pedagogy that are required to do folklore research in India. Because basically, you know, almost all the folk theorists that we have been teaching and discussing in Indian academia are Western, unfortunately so. But slowly, folklorists like us, like you, we all are going back to Indian folkloristic, towards Indian theorists, and towards the theories related to Indian drama, Indian folk theater, Indian folk poetry, and all that. You know, like you have one a genre called Indian English literature.
But there is no genre like Indian English folk literature or Indian folk literature in English. You don't have any such genre. Then how do we teach folklore as a part of our university tables? That's a very big question, isn't it? We depend on translation. We translate our bhasha literatures, our folk literatures written in our Indian languages, in Indian languages that are accepted, approved by the Parliament of India, by the Constitution of India, and also on so many oral languages which have been slowly documented. So this course, MAG 16, is very, very flexible. When I did the need assessment survey for this course, I had sent a questionnaire to many stakeholders like you all to ask them what kind of folk literature or folk pedagogy they are keen on reading and listening to. And the response was on a flexible approach towards folk. There was a school of thought in Indian academia who believed that anything oral is folklore. And once it is documented, once it is written down, once you write it down, the folk element is lost. That way, it no more remains a part of our folk literature. That is what a very, very rigid school of thought, or a school of thought that didn't believe in the flexibility of folklore, they had that opinion. And when I proposed this academic program and also this particular course to be a part of our English studies in India, to be a part of our MA English, it was definitely a Herculean task for me to justify why folklore. This question came to me 100 times. Why folklore? Something that is oral, something that is a performative art form, something that we would like to listen as a part of our dance, our music, our performative art forms, and our tangible and intangible cultural heritages. Why are you planning to do a course? Why are you trying to bring it to the university table and make it a part of our MA English? That was the basic question. And with a very, very scientific approach to folklore, I had to justify, and ultimately today you have so many academic courses and programs from Indira Gandhi National Open University, the world's largest university, on folk literature. We have a PG diploma in folklore studies. We have a complete MA program of 64 credits in folk literature and culture studies, and now this MAG 16, for which the students have overwhelming response. This is Indian folk literature. Here I have taken texts. I won't say folk texts. I have taken Indian literary texts which have extensively used folk as an element. So I have taken those texts. I have tried to find out the folk elements thereof and then present those to you in English, of course, as it's a part of our MA English. And my approach is scriptocentric, phonocentric, and body-centric. I would repeat, my approach in this particular course has been scriptocentric, which means writing. The oral literatures have been written down. You remember, there can be so many stories in your childhood, Dadi Nani Kahaniya. Your grandparents might have told you so many folk tales. Now, that oral literature or that orality has been translated to different Indian languages, and then simultaneously they have been translated to English and they have been made a part of this course. So that is what I call scriptocentric. So something that is written down. And then phonocentric, something that you can hear. Folk music you can hear. Oral stories, folk tales you can hear. Folk instrumental music. There are so many beautiful instruments in Indian musical scenario. So many interesting folk musical instruments which are also a part of the phonocentric folklore approach. And then body-centric performative art forms. Theatre, drama, mudraएं, like you dance, so these are the mudras, isn't it? There are so many mudras that you have in any kind of dance forms. So that is body-centric, and also body tattoo. You do body tattoos, body piercing, body tattoo, so many things to do with the body. So scriptocentric, phonocentric, and body-centric approaches to Indian folkloristic has been my theoretical background in this course. Having said that, I will once again come back to the syllabus of this particular course before I go to memory culture. Today's program, this particular program is on memo culture. M-N-E-M-O, or memo, which is memory culture. I will talk about memory, how history and memory are different. You know about history. History is something that is written down. Usually,
The winner writes history. The powerful writes history. Then what happens to the history or even the story of the one who is less powerful, the one who doesn't have the power to write history, to document history? So that becomes a part of your folklore. That becomes a part of your indigenous cultural heritage, your traditional knowledge system, and that becomes a part of your oral culture. And then in this particular course, we have taken lots and lots of oral literary theories, stories, poetry, music, even fiction. We have taken everything oral, and then we have translated those to the written languages, and then again to English, and we have made them a part of the course. So this is what we are basically talking in the block 1. The unit 4 is theoretical approaches to folklore. So there are so many literary theories which can be applied to the understanding of folk literature. When I take my classes for the MPhil and PhD coursework, then I teach them new historicism and cultural materialism. I ask those students to go through new historicism, which means parallel reading of two texts, reading a literary text along with a text of anthropology, reading a literary text along with a text of history, and then comparative analysis, and then looking at one discipline from the perspective of another discipline. So that is what we have discussed in this particular block. And then the next block, block 2, is identity and hybridity, Kshetra and Desha. Kshetra, Desha, Rajya and Nadu. We are talking about all of them. So Nadu is a cultural concept, Desha is a political concept. And we have applied cultural theory in order to understand this Kshetra, Desha, Rajya and Nadu in Indian folkloristic. Bringing folklore to the university table is definitely a challenging task, because these kind of complex identities, complex theories that we have always been talking about but we never documented. Documenting them and bringing them to a course has definitely been a learning experience, a challenging experience for all of us, right? Yeah, and then the next block, block 3, talks about folk literature, sources, characteristics, classifications and functions. So introducing folk literature. And then what is folk literature is the most important question. As I already told you, that there is nothing like Indian folk literature in English. So Indian Bhasha literatures, Indian languages. When I say Bhasha literatures, I have a lot of respect towards Indian Bhasha literatures, because we are a very, very rich, we have a very rich language and literary culture. We have so many languages. If you look at the NEP document, National Education Policy document, the 67 pages document, then the word language has been used 202 times, if I'm not wrong. So the government of India and our academia is giving so much importance to languages now. Initially in the world there were 6 lakh languages, and today there are somewhat like 6,000 languages. Then what happened to all those languages? This is so very challenging and so important for linguists and folklorists like you all to think about. What happened to all those languages? They died a natural death due to the lack of documentation and preservation. No one documented those languages. No one preserved those languages. No one wrote down those languages. So when I designed these academic programs and this course, then I had the good fortune, I had the opportunity to meet so many last speakers of many dying languages in the country and even in different parts of the world. It was a big challenge to convince the dying languages groups that yours is a endangered language and it needs documentation. Someone has to preserve those languages. It was really a big challenge, but then when we succeeded in doing it, we ended up recording their music, their folk tales, their happinesses, their sorrows, their love stories, their stories of heartbreak, so many things we documented. And some of them, they had the script. Some of them did not have the script. So when they didn't have the script, then we documented those in Indian languages, and then we translated those to English. Then we created a complete database of the dying languages of the world, and that is how we contributed in our small little way towards the language preservation policy.
The Government of India, through National Education Policy, empowers you to talk about the dying languages and then makes the languages a part of your memory, a part of your memory culture. You think about a memory, you think about a culture when you talk about a language. And then the next block is folk tales of India, motifs, modes, and modes. So we are talking about the folk tales, the forgotten folk tales of India. A.K. Ramanujan's collection of folk tales, that is a part of that, the course, and then Manoj Das' tales told by the mystics, and the lady who died 1.5 times, and then by Mawangdai, the legends of Pancham. So many important, like Warrior Elwins when the world was young. Those kind of, fiction folk tales are a part of this course, and we have discussed in detail about the folk elements in those folk tales. And then the next block is folk poetry, and oral epics of India by Blackburn, then The Awakened Wind by Sitakant Mahapatra, then Ramayana in Modern South India by Paula Richman. Such interesting and important texts are a part of this. And in the introduction and the conclusion of the courses, we have also talked about many other folk poems which have been documented, which have been a part of our oral cultures, and slowly they are becoming a part of our, scriptocentric culture. When I said scriptocentric, which means the written culture, writing culture. And then another block 6, is folk in contemporary Indian fiction. As I already told you, that there is nothing like Indian folk literature in English fiction. So we have taken our mainstream novels, so-called mainstream novels like Pather Panchali is a part of this course, this block. And then we have Maila Anchal, then Gopinath Mohanty's Poroja, then we have The Dilemma by Vijay Dandetha, then Chemmen by Shankar Pillai, and then Kanthapura by Raja Rao. So those texts where a lot of tribal and folk literatures are being discussed, and you go back to an indigenous culture when you read these kind of texts. We have made them a part of this course, and then we have extensively brought out the folk elements in them. For example, if you read Chemmen by T. Shankar Pillai, so there is a tradition that when the fisherman goes to the deep sea to catch fish, his woman, his wife, his lover would wait for him with a lot of faith and confidence, and she should maintain her fidelity for him. Otherwise, the fisherman will drown in the sea. That kind of a belief system they have. So, these things that are a part of our folk tales, folk stories, have been brought out by the course writers in these units, of course, with very strong theoretical approaches to them. In most of the units that I have prepared myself, I have used new historicism and cultural materialism. Cultural materialism, dear students, you must go through this. What is cultural materialism? If you want to read a text, you have to know the culture all around the text. The text is in the center. A text is born only when a reader reads it. Otherwise, the text dies, isn't it? So, in order to read a text, you have to know, you have to understand the culture around the text. What are the things that the writer has gone through? Apply your reader response ideas. The writer, his or her life, and the culture that the writer belongs to. The medicine, the anthropology, everything of that, the geography, the ecology, everything of that particular period you have to understand. In a way, folklore and ecology are closely associated. Like in one of the units, we are talking about the Chipko movement, where women are a part of folk cultures. Women are a part of our cultural, our ecology and the system thereof. Women are hugging the trees. In order to fell a tree, in order to cut a tree, first somebody has to cut the woman. So Chipko movement, they're hugging the trees. So how the Chipko movement became a part of our literary culture, how our social and our rest other issues, that debatable issues that we bring to our tables and we talk about those, and slowly we have made them a part of our courses. So that is the block of block 6 that talks about the different novels and our social issues, and how the social and the ecological issues have been discussed by the folklorists and the writers, and then they are made a part of your research and pedagogy, isn't it? And then the last block 7, it talks about folk theatre. We distinguish theatre and drama. What is theatre? What is drama? Something that is written or something that is performed. Theatre is a part of our performative art forms.
Barnambana, it is Carnatic folk theatre for Shakespearean tragedies. How in Carnatic folk theatre they have been influenced by the by the drama of Shakespeare's tragedy, and then they are presented in the Carnatic folk theatrical forms. Here I am reminded about intertextuality and polyphony. Intertextuality, reading one text from the perspective, from the light of another text, and polyphony, so many beautiful musical voices together. Polyphony is a very, very beautiful literary term that is slowly becoming so important in our pedagogy today, and polyphonous presentation of the texts. Here we are talking about Jatra, Kathakali, Tamasha, Nautanki, and Pala. Such interesting and important and also endangered art forms in India. For example, this Pala. I remember my childhood, we had Pala performances in our villages when overnight one person will sing, a main singer, in a sing-song voice, he will present some mythical story. So folklore and mythology are always close-knit, closely associated, closely connected with each other. So in this Pala performance, the main singer, who we called Gayak, he used to sing or present some mythical tale. And then there was another person assisting him, supporting him, standing beside him, and he would be repeating for your memory. Again, memory comes here. Everything has to be a part of your memory culture. Without memory, folklore will not work. Folklore will never function when you don't have things in your memory. So now there is a thin line between memory culture and written culture. Memory culture has a time limit. Maybe generation to generation, our grandparents had passed on some stories to us. We may pass on to our children. In due course of time, they may or may not pass on those things to their children, because now life has become so hectic. Everyone is so busy in their own work. So probably those cultures may die a natural death in the absence of documentation. So when I say memory culture or memo culture, I'm compelled to tell you that make your memory culture a part of your scriptocentric culture, your written culture. You have to write down your memory. You have to document your memory. So that is where language death and culture death kind of things come up. Dying cultures and dying languages have to be documented, have to be preserved. This is what has been emphasized by the national education policy also. And I am glad that the things that the national education policy is emphasizing, we are also making them a part of your courses, your coursework in our university. And then here another block, another unit chapter, it talks about folk, popular and film. How our films, our movies, Bollywood movies and also the regional movies, they talk about a folk culture. So many folk tales, folk narratives are a part of your OTT platforms and your texts and your films and your media and social media. They're so full, they're so replete with, folk cultures. Like if you look at the trucks, they would have written one thing like Buri Najar Wale Tera Muh Kala. And that's a part of folk. And how now that has become a part of your popular culture. So these things that you see in our daily life, and slowly you bring them to your texts and then you make them your contexts. So texts and contexts of folklore, that is a part of this particular block. And Girish Karnad's Hayavadana and Nagamandala and Habib Tanvir's Charandas Chor kind of texts, they are also a part of this particular block. Having said that, I will once again go back to the memory culture. I am quoting Matthew Arnold from the text Absence. We forget because we must and not because we will. Then Ian Hawking, I am quoting, one feature of modern sensibility is the idea that what has been forgotten is what forms our character, our personality, our soul. So something that is forgotten. So forgetting is so easy. We forget one culture. We forget our written cultures. We forget our musical cultures. And slowly we try to bring them back to our memory culture. So forgetting and memory culture, they are two sides of one coin. That we did not forget anything. For that we have to write down. So memory culture is a part of our scriptocentric culture when we write down and we remember something. And in order to talk about your memory culture or your memo culture, you have to have some idea about the different methods of research.
There was a time when people used to do intradisciplinary research. And intradisciplinary research means what? Looking at a text as a text, like reading Shakespeare, as a story or something like that. So, intradisciplinary research is slowly going away from the scenario. Now, slowly we are coming back to cross-disciplinary research. Now, what do you understand by cross-disciplinary research? Viewing one discipline from the perspective of another. So, looking at the scriptocentric culture from memory culture. So, looking at one discipline from the perspective of another. This is what you call cross-disciplinary. And next is multidisciplinary. So, by the term multidisciplinary, what I understand is people from different disciplines working together. So, when you are a person of drama, or you are a person of poetry, or you are a person of literary theory, so when all of you work together, or you are a person of anthropology, and then literature, and then you look at the disciplines of each other from the perspectives of each other. So that is what you call multidisciplinary. And then it is interdisciplinary. Next is interdisciplinary, which means integrating the knowledge systems and the methods from different disciplines and then presenting them. And the final one is transdisciplinary. By transdisciplinary, I mean creating a unity of intellectual frameworks. So you combine different disciplines, you create a new discipline, and it's a combined presentation of a fresh and new discipline. When I say a new discipline, I'm trying to focus on folklore as something which is very, very important from the point of view of the researchers and students for even their employment. Lot of students ask me that, Madam, what is the employment facility if I do something on folklore studies? Before I get into that, I feel so proud to tell you that since I started my research pedagogy and my critical engagement with folk literature and folkloristic, I have got wide exposure with interesting folklorists like you all. This program, MA in Folklore and Culture Studies, it has students from medicine. One doctor, a senior doctor from a very important government hospital in Delhi is a student, and he is doing a project on the indigenous medicine systems. He's talking about Ayurveda, about Unani, and then about the contemporary and the allopathy medicine system, a comparative analysis. So when you talk about employment, we have to also think about the different disciplines that can come under folk literature. So, the people who do their courses on folk literature, they can get into teaching and research departments in folklore studies. Then they can get into universities, libraries, museums, national archives, historical arts and publishing houses, and funding agencies, central and state government institutions, agriculture, rural sociology, extension, medicine and nursing, women's studies, African American studies, popular culture, English and foreign language and literature departments, as translators, interpreters, curators, musicologists, teachers, artists, performers, and many more. Even film industry and Bollywood, they are looking for interesting research on folklore. So when folk literature or folklore studies creates so many disciplines under it, I am tempted to tell you that through folklore, you are creating an Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India. So when you create a self-reliant India, you also create a culture of memory. You go back to the indigenous cultures of different countries, different parts of the world, different regional languages, Bhasha studies, and then you create an archive of all of them. By creating an archive of all those dying and endangered languages and cultures, you are contributing to the memory culture, something that is in the memory of a culture, something that is in the memory or nemo, M-N-E-M-O, nemo or memory of a cultural heritage. You are documenting that. So in next lectures, in my future lectures, I will give you very specific examples of memory culture, how we are documenting those interesting and important memories and making them a part of our research and pedagogy. I will talk about that. For today, I will give it to you as food for thought for your research in future. Take important and interesting things from your memory, from your region, from your state, in the languages, and try to document them as a folklorist. Thank you very much. In case you have any doubts, please email me. My email ID is nandinisahu@ignou.ac.in. Thank you.
We wear clothes on a daily basis, but have we ever wondered where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. A warm welcome to IGNOU. If you are creative, if you can write well, and if you can visualize, mass communication is the correct career option for you. I am going to talk about postgraduate diploma in journalism and mass communication, which is also the first year of MA program in journalism and mass communication. So any learner who has done a postgraduate diploma in journalism and mass communication is eligible to take admission straight away into the second year of our master's program in journalism and mass communication. Duration to complete this program is minimum 1 year, and because we have this inherent flexibility in distance education system, you can take up to 3 years to complete this program. The minimum eligibility criteria for taking admission in this program is bachelor's in any discipline. To give you a glimpse of what are the various components of this program, we begin with telling you what mass communication is, what are the various areas, various branches of mass communication. Then we go on to tell you about the various reporting techniques and beats of reporting, followed by media ethics, the principles, the codes of conduct that you must follow, and we also focus on the writing skills and editing skills for print media. Now this program comprises of 8 courses of 4 credits each. 25% of the entire program is practical based. So we have 6 theory courses and 2 practical courses. This program is so designed so that it will be able to make you more employable in the market. So it helps you build a career in print media, in radio, television, new media, as well as the allied subjects of mass communication, which could be media marketing, advertising, public relations and corporate communications, event management. This can also help you become an entrepreneur in areas like photography or having your own production house and so on. So I hope that you will be excited to join this program, and we will be waiting to welcome you here in IGNOU.
Welcome viewers to this teleconferencing session. This is primarily for the course BHIC 112, and today we are going to discuss an important theme of that course, that is developments in the field of paintings. This is important for us to understand that along with political history, along with economic history, we must also pay attention to the cultural history as well. आज हम लोग बात जो आपसे करने चाह रहे हैं वो प्राइमरली पेंटिंग, चित्रकला के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, खासकर 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। मैं ये बात भी कह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पॉलिटिकल हिस्ट्री की अपनी इंपॉर्टेंस है, जिस तरीके से इकोनॉमिक हिस्ट्री की अपनी इंपॉर्टेंस है, वैसे ही कल्चरल हिस्ट्री की अपनी इंपॉर्टेंस है और हमको उसको समझना चाहिए। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जो चित्रकला हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उनको हम लोग देखें और उनके बारे में समझने की कोशिश करें कि उनमें क्या परिवर्तन आ रहे थे, वो परिवर्तन क्यों आ रहे थे, किस तरीके से वो परिवर्तन राजनीतिक सत्ता के स्वरूप को भी दर्शाते हैं। इसके ऊपर भी हम आपसे आज बातचीत करेंगे। द प्राइमरी फोकस विल be on the Mughal period, that is the Mughal tradition of painting from Akbar to Shah Jahan and Aurangzeb. In the subsequent lecture of this series, we will be discussing the regional variations also, the Deccani school, the Pahari school, and the Punjab school. That we will discuss in the subsequent lecture. But today we will be focusing primarily on the Mughal era and the Mughal period, the Mughal court culture, paintings, etc. There are other traditions also, but we will be discussing that later on. It is important for us to understand and realize that like any other society, India also has a very long tradition, very old tradition of paintings. मतलब हमारे यहाँ पेंटिंग का ट्रेडिशन बहुत प्राचीन काल से है। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ रही हो पेंटिंग जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। और वो जो पेंटिंग के ट्रेडिशंस रहे हैं वो इवॉल्व करते रहे हैं, चेंज करते रहे हैं, बदलते रहे हैं। अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूँ तो जो आदिम मनुष्य जो था, जो प्रिमिटिव मैन है, वो भी अपनी पेंटिंग बनाया करता था, जिनको हम रॉक पेंटिंग्स के रूप में देखते हैं, जिसको हम लोग भीमबेटका में पाते हैं, भोजपुर भोपाल में पाते हैं, मिर्ज़ापुर के इलाके में पाते हैं, सोनभद्रा की वैली में पाते हैं, जिसका एक डिपिक्शन आपको इस वक्त स्लाइड के ऊपर दिख रहा है। ये जो पेंटिंग्स हैं ये बेसिकली उस वक्त के आदिम मानव अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ उसको टोटम या जादू टोने का भी हिस्सा मानते हैं कि शिकार पे जाने से पहले उन्होंने शिकार का डिपिक्शन किया तो शिकार मिल जाया करता था। देयर आर वेरियस थियरीज अबाउट इट, बट अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव अ ट्रेडिशन ऑफ म्यूरल्स की दीवारों के ऊपर पेंटिंग की गई है, छतों के ऊपर पेंटिंग की गई है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पेंटिंग की गई है, और उसके अपने वेरिएशंस भी हैं, फ्रेस्को भी है उसके अंदर, बट उस डिटेल में मैं अभी आपके संग नहीं जा रहा हूँ। लेकिन देयर इज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन, इवन बिफोर द कमिंग ऑफ मुगल्स देयर वाज अ लॉन्ग एंड अ वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग। इस पेंटिंग ट्रेडिशन के अंदर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो भी पेंट की जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी पेंट किया जाता था। आपको पाम लीव्स के ऊपर भी पेंटिंग का डिपिक्शन मिलता है। वो पेंटिंग जो कथाएं लिखी गई हैं, जो कहानियाँ लिखी गई हैं, उन कथाओं कहानियों को डिस्क्राइब करने के लिए भी पेंटिंग इस्तेमाल की जाती थी। साथ ही साथ मंदिरों में बहुत ज़्यादा पेंटिंग का हमको देखने को मिलता, मतलब टेम्पल्स जो हैं वहाँ भी पेंटिंग का डिपिक्शन हुआ करता था। और आमतौर के ऊपर जब हम लोग इस ट्रेडिशन को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अजंता का नाम आता है, अजंता केव्स। और अजंता केव्स की जो पेंटिंग है दे आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट द मोमेंट एंड शुड बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अजंता की केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स हैं वो प्राइमरली बुद्धिस्ट पेंटिंग मानी जाती हैं, और उनके अंदर जिन कहानियों का चित्रण हुआ है वो बेसिकली जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं का चित्रण उसके अंदर किया गया है। तो जो थीम्स थी, जो पेंटिंग की थीम थी, वो प्राइमरली आपकी जातक कथाओं या जो आपकी पौराणिक कथाएं थीं उनसे मिल करके उठता था, उनसे उठ करके वो आया करता था। और वो जो परंपरा थी वो परंपरा कायम रही, अलग अलग स्तर के ऊपर, अलग जगहों के ऊपर विकसित होती रही। लेकिन हिस्टोरियंस का कुछ समय तक के लिए मानना था कि 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में हमें पेंटिंग के उतने अच्छे ट्रेडिशंस या उतनी अच्छी परंपरा देखने को नहीं मिलती है, एंड परहैप्स वी लॉस्ट द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट रिसेंट रिसर्च हैव एस्टेब्लिश दैट नो, दैट इज़ अ मिसनॉमर। ये गलत है, ऐसा मानना गलत है, क्योंकि हमें उस वक्त की पेंटिंग भी देखने को मिलती हैं, उनकी एविडेंस भी मिलती हैं, और उनके बारे में हमें अब ज़्यादा जानकारी मिल रही है। उसकी वजह ये भी है कि नए नए तरीके की आर्काइव्स हमारे सामने खुल रही हैं। जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनकी हम लोग डेटिंग कर पा रहे हैं, उनकी हम लोग तिथिक्रम निश्चित कर पा रहे हैं, सो हमें मालूम चल पा रहा है कि वो किस काल की पेंटिंग है। तो
पेंटिंग का ये जो ट्रेडिशन था, जिसको हम लोग किसी लेवल के ऊपर इतिहासकार ये मानने लग गए थे कि वी लॉस द ट्रेडिशन बिटवीन 11th एंड 14th सेंचुरी, दैट इज़ नॉट द केस. वी हैव अ कंटिन्यूस ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग इवन प्री मुगल पीरियड ऑल्सो. और वो पेंटिंग में जो 2-3 महत्वपूर्ण तत्व या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती हैं. उनमें एक है कैलीग्राफी. कैलीग्राफी मतलब जो कुरान को लिखने का तरीका था, उसको बहुत आर्टिस्टिक तरीके से डिपिक्ट किया जाता था. तो कुरानिक कैलीग्राफी भी हमको देखने को मिलती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर देखने को मिलती है. हम लोग बहुत से जो मस्जिदें रही हैं, जो मॉन्यूमेंट्स रहे हैं, उनके ऊपर हमको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं जो कुरानिक कैलीग्राफी के अंदर लिखे गए हैं. तो कैलीग्राफिक भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन के रूप में इमर्ज कर रहा था. इसके साथ साथ जो मसनवी लिखी जा रही थी, जो टेक्स्ट लिखे जा रहे थे, जो प्रेम गाथाएँ लिखी जा रही थी, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर भी प्रेमाख्यान जो लिखे जा रहे थे, इवन दोज प्रेमाख्यान्स हैड द रिच डिपिक्शन ऑफ द पेंटिंग्स. मतलब जो कहा जा रहा है, जो उस कथा में बातचीत की जा रही है, उसका चित्रण भी हो रहा है. तो आपको देखने को मिलता है कि जो पेंटिंग का ट्रेडिशन अलग अलग स्तर के ऊपर अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है. सो ये मानना अब गलत माना जा रहा है कि मुगलों के पहले पेंटिंग ट्रेडिशन शायद डिक्लाइन पे था. ऐसा नहीं है, उस वक्त भी परंपरा थी और बहुत मजबूती से मौजूद थी. इस वक्त मैं एक बात और कह देना चाह रहा हूँ अपने छात्रों से, खासकर से इस बात को ध्यान रखिएगा कि 16वीं शताब्दी और ख़ासकर 17वीं शताब्दी के बाद के हमें डॉक्यूमेंट ज़्यादा मिलते हैं, हमें उस वक्त की पेंटिंग ज़्यादा सर्वाइव करती हुई मिलती हैं, क्योंकि सर्वाइवल नहीं आसान था. तो वो जो मटेरियल था जिसके ऊपर वो डिपिक्ट की जा रही हैं, अगर वो मटेरियल ख़राब जाएगा तो पेंटिंग सर्वाइव नहीं करेगी. फॉर्चुनेटली 16th सेंचुरी की लेटर हाफ और स्पेशली उसके बाद के काल में हमको मैन्युस्क्रिप्ट्स का ट्रेडिशन, मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोटेक्शन, मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वाइवल रेट ज़्यादा देखने को मिलता है. इसलिए वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन टू कमेंट ऑन द पेंटिंग ट्रेडिशन ऑफ द मुगल एंड सब्सिक्वेंट एराज, सिंपली बिकॉज वी हैव अ मच ग्रेटर रिपोजिटरी अवेलेबल एट आवर डिस्पोजल. और उस रिपोजिटरी का फ़ायदा ये है कि हम आपसे ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं, हम ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग, द कैरेक्टरिस्टिक्स, द न्यूएंसेस ऑफ द पेंटिंग, कि पेंटिंग की खूबियाँ क्या हैं, किस तरीके से उसमें बदलाव आ रहा है, क्या क्या बदलाव आ रहा है. इसको समझने के लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको ले चलूँ कि जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन स्थापित हो रहा था, सो हुमायूं को शेरशाह ने खदेड़ दिया था एंड हुमायूं मेंट टू ईरान. सफ़ाविद अंपायर से जाके उसने हेल्प मांगी थी और सफ़ाविद राजा ने उसकी हेल्प भी की, जिसकी वजह से शाह ने, नॉट राजा कहूँगा, शाह ने हेल्प भी की एंड मुगल्स रिकॉन्कर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश देयर रूल. ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स. कि जब हुमायूं यहाँ से ईरान जाता है, सफ़ाविद के पास जाता है और वहाँ से वापस आता है, while coming back not only various nobles came with the हुमायूं but artists also came with the हुमायूं. मतलब हुमायूं जब लौट करके आ रहा है तो उसके संग बहुत से आर्टिस्ट आ रहे हैं. और चूंकि सफ़ाविद से संबंध अच्छे बन गए हैं, तो मुगल रूल इस्टेब्लिश होने के बाद हमें सफ़ाविद से, ईरान की रिच परंपरा से भी बहुत से आर्टिस्ट आते मिल रहे हैं. तो जो पेंटिंग है, उस ट्रेडिशन को एक नई लाइफ भी मिलती है, एक नया जीवन भी देखने को मिलता है, जिसका बिल्कुल साफ कंक्लूजन या द कल्मिनेशन वी सी इन द क्रिएशन ऑफ द और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रॉयल एटेलियर, या हिंदी में कहूँ उसको तो तस्वीर खाना स्थापित करता है अकबर. अकबर पेंटिंग बनाने के लिए बाकायदा एक विभाग स्थापित करता है जहाँ के ऊपर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं. और आपको सरप्राइज़ होगा, जो हमें पहला अर्लीस्ट या जो हमें शुरुआती दौर की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, उसमें अकबर के काल में महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन होता है, मतलब जो पर्शियन में महाभारत ट्रांसलेट की जा रही है, उसमें जो पेंटिंग्स की गई हैं वो हमें अकबर के काल की शुरुआती दौर की पेंटिंग्स के अंदर देखने को मिलती हैं. मतलब जो अकबर तस्वीर खाना स्थापित कर रहा है, उसके अंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स को पेंट किया जा रहा है कि जो कहानी लिखी जा रही है और कहानी लिखने के साथ साथ उसके अंदर पेंटिंग भी दिखाई जा रही है. तो जो पेंटिंग्स हम आपको दिखा रहे हैं वो इस वक्त आपको हमज़ानामा से जुड़ी हुई पेंटिंग देखने को मिलती है. और ऐसे ही हमें ये भी एविडेंस मिलती है कि अबुल फजल ने बताया कि करीब करीब 17 आर्टिस्ट उसने आइडेंटिफाई किए हैं. लेकिन प्रोफेसर SP वर्मा, जिन्होंने मुगल पेंटिंग के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, ही आर्ग्यूज दैट देयर वर ऑलमोस्ट 225 पेंटर्स इन दी रॉयल एटिलियर ऑफ द मुगल्स. मतलब मुगलों के तस्वीर खाने के अंदर करीब करीब 225 मौजूद थे कारीगर, और वो उसके ऊपर काम करते थे, पेंटिंग्स के ऊपर काम करते थे. आपको एक कहानी सुनाऊं तो आपको इस पेंटिंग से जुड़ी एक चीज़ और भी समझ में आएगी, उस पर आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा. बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, जब वो
फ़ारसी में उसका तर्जुमा होता है और फ़ारसी में उसको रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की जा रही है उसके अंदर भी पेंटिंग्स का डिपिक्शन हो रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंगली उन पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग ऐसी भी है जिसके अंदर बाबर को घोड़े पे बैठा, बाबर को हाथी पे बैठा दिखाया गया है। एंड सरप्राइजिंगली बाबर हाथी पे नहीं बैठा था, इसको मैं किसी और वक्त चर्चा भी करूंगा आप लोगों के संग। लेकिन ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि पेंटिंग को हर वक्त हर बार सैक्रोसैंक्ट मान लेना कि ये रियलिटी का डिपिक्शन कर रही है, कोई ज़रूरी नहीं है। वो डिपिक्शन कर रही है ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ द पेंटर ऑफ दैट रियलिटी, व्हाट ही इज इमेजिनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर हिस्टोरिकल फैक्ट। तो पेंटिंग्स को आमतौर के ऊपर स्टूडेंट्स ये मान बैठते हैं कि इट इज़ true depiction of the contemporary society. It may be, it may not be. There are possibilities. The imagination play very important role, and thus there is a diversion from the reality of the time. So ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम रॉयल एटेलियर या जो तस्वीर खाना है मुगलों का, उसकी फंक्शनिंग से समझ पाते हैं कि आमतौर के ऊपर पेंटिंग किसी एक आदमी के द्वारा, किसी एक पेंटर के द्वारा नहीं बनाई जा रही है। इट्स बीइंग डिपिक्टेड एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, विच मीन्स देयर आर आर्टिस्ट हु आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पेंटिंग। सर्टन एस्पेक्ट्स आर बीइंग डिपिक्टेड बाय वन पर्सन, अदर एस्पेक्ट इज बीइंग डिपिक्टेड बाय अनदर पर्सन। मतलब ये एक सामूहिक प्रयत्न का हिस्सा हो रही थी पेंटिंग। आज हम लोग आमतौर के ऊपर सोचते हैं कि फला फला पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई, that particular painter might be playing very important role during the Mughal period, but अलग अलग पेंटर्स भी उसके अंदर काम करते हैं। हमको अकबरनामा में रेफरेंस मिलता है कि करीब करीब 4 लोग भी एक पेंटिंग पे, उनको दस्तखत मिलते हैं, 4 लोग एक पेंटिंग के ऊपर काम कर रहे थे, विच मीन्स इट वॉज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो जो तस्वीर खाना के अंदर आपको एविडेंस मिल रहा है कि वहाँ के अंदर बहुत से चित्रकार बैठे हैं, बहुत से पेंटर्स बैठे हुए हैं, सो दे वर वर्किंग कोलैबोरेटिवली ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ द पेंटिंग। सो पेंटिंग बनाने का कार्यक्रम अपने आप में सामूहिक तौर के ऊपर भी देखने को मिलता है। ये भी देखने को मिलता है कि कोई एक पेंटर आउटलाइन बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, दूसरा पेंटर है जो उसके अंदर शेड करने में अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तीसरा है जो उसको कलर कर पा रहा है और कलर के सहारे उसके न्यूएंसेस को आपके सामने चित्रित कर पा रहा है या रख पा रहा है। विच मीन्स कि जो पेंटिंग है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इमेजिन की जा रही है, और वो इमेजिनेशन इज बीइंग शेयर्ड बाय द कलेक्शन ऑफ द पेंटर्स हु आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर पेंटिंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि किसी एक आदमी का इमेजिनेशन नहीं है, और इसी को हम आगे भी डेवलप भी करेंगे, आपसे इस पर बातचीत भी करेंगे भी हम सबसेक्वेंट लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से इस ट्रेडिशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अरेंजमेंट कैसे डिसाइड होता था इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये बात हम लोग को साफ तौर पर समझ में आ रही है कि इट वॉज अ टीम वर्क। एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दरोगा सुपरवाइज करता था, एक दरोगा नाम का अफसर हुआ करता था जो पेंटिंग के ट्रेडिशन को सुपरवाइज करता था, और वो ये बात देखा करता था किसको क्या मटेरियल मिलना है, कहाँ से कलर आना है, कलर कैसे उपलब्ध होना है, कागज़ किस रूप में आएगा, या पेंट का कपड़े पे बननी है तो कौन सा कपड़ा आएगा, और वही अल्टीमेटली मुगल बादशाह के सामने बनाई गई पेंटिंग को पेश भी करता था, प्रस्तुत भी करता था, पहुंचाता भी था, डिस्प्ले भी करता था। विच मीन्स देयर वाज अ होल डिपार्टमेंट which was catering to the art of painting during the Mughal period, जिसको हम तस्वीर खाना बोलते हैं या रॉयल एटेलियर ऑफ द मुगल्स बोल रहे हैं। तो ये जो पूरी परंपरा है, इस फंक्शनिंग के अंदर आपको जो पेंटिंग के ट्रेडिशंस हैं, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। Let me also point out the characteristics of Mughal paintings. That is very important for us to understand, because these characteristics distinguish Mughal paintings from the other paintings. And we will also realize subsequently, that in subsequent period, the impact of these characteristics is seen on the regional variations of the painting traditions in India. So we will discuss that in the later period, later lecture. The most important feature of the Mughal period is, or the Mughal painting is, the naturalism and the rhythm. There is a naturalism, बहुत natural depiction of the things किया जा रहा है। मतलब इमेजिनेशन को उतना स्पेस नहीं दिया जा रहा है जितना इस रोल दिया जा रहा है वास्तविकता का चित्रण करने के लिए। मतलब नेचर को नेचुरली डिपेक्ट करो, उसको अंदर अलौकिक मत बनाओ, डोंट मेक इट सुपर नेचुरल, मेक इट वेरी वेरी रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द सीन्स विच दे इमेजिन इज बीइंग डिस्प्लेड। जो क्लोथिंग के ऑब्जेक्ट हैं वो उस रूप से डिस्क्राइब कर रहे हैं जिनके सारे आप यू कैन डिस्टिंग्विश द क्लास ऑफ द पीपल बीइंग डिपिक्टेड इन द पेंटिंग। मतलब यू कैन सी द हायरार्की ऑफ द पर्सन्स depicted in the painting on the basis of the clothes which they are wearing, which means a very realistic representation of the contemporary social reality can be seen in these paintings.
जो पेंटिंग्स के अंदर फोकस है या जो मेन डिपिक्शन है, along with that we also have a space in the background, and that space of the background is also used to complement the event which is the primary focus of the painter. मतलब जो मुख्य उद्देश्य है पेंटर का, उसका डिपिक्शन तो सेंटर में हो रहा है, लेकिन जो उसके आसपास की बैक स्पेस मौजूद है, साइड स्पेस मौजूद है, ऊपर की स्पेस मौजूद है, नीचे की स्पेस मौजूद है, उसमें आसपास की चीज़ों का डिपिक्शन किया जा रहा है, सो दैट यू गेट अ कंप्रेहेंसिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोटिव ऑफ द पेंटिंग. जिस चीज़ को पेंट किया जा रहा है उससे जुड़े हुए और बहुत से डिपिक्शंस और बहुत से इवेंट्स और बहुत से incidents are also being depicted on the painting. So स्पेस बहुत प्रॉपरली यूज़ की जा रही है, बहुत अप्रोप्रिएटली यूज़ की जा रही है, और उसके अंदर स्पेसिंग कर दी जाती है हायरार्की को ध्यान रखते हुए कि अगर मुगल एम्परर डिपिक्ट हो रहा है तो हायरार्की में ऊपर दिखेगा और बाकी उसके सब्सिक्वेंटली दिखेंगे, या अगर मुगल एम्परर दिखाया जा रहा है सो विल बी एट द सेंटर ऑफ द पेंटिंग एंड अदर्स विल बी ऑन द मार्जिन्स, ऑन द साइड्स ऑफ द पेंटिंग. But hierarchy of the social order is very clearly maintained in these paintings. What is also very important to realize that during the Mughal paintings, you also see the capture of movement. The vigorous movements are also being captured. You are riding a horse, that is also being captured. आप शिकार के ऊपर गए हैं तो शिकार के मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, विच मीन्स द मूवमेंट्स आर ऑल्सो बीइंग कैप्चर्ड इन दिस पेंटिंग. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साथ ही साथ जिसके ऊपर मैं अभी बाद में बातचीत करूंगा आपसे, जो उस वक्त की वनस्पति है, जो फॉइलेज है, जो उस वक्त का फूलों का चित्रण है, दैट इज ऑल्सो बीइंग डिपिक्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरली. मतलब यू आर बीइंग प्लेस्ड इन द नेचुरल सेटिंग. दैट इज द इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि नेचुरलिज्म जो है उसको बहुत स्पेस दी जा रही है ड्यूरिंग दिस पेंटिंग ट्रेडिशन. एंड इट शुड बी एम्फसाइज दैट जो अकबर के काल में पेंटिंग बन रही थी, दैट इज एमालगमेशन ऑफ पर्शियन ट्रेडिशन एंड इंडियन ट्रेडिशन. दे आर बीइंग इंटरैक्टिंग, मीन्स जो हिंदुस्तान की परंपरा है वो और जो पर्शिया की परंपरा रही है, दैट इज बीइंग एमालगमेटेड एंड अ न्यू क्लास ऑफ पेंटिंग इज बीइंग क्रिएटेड. That is the Mughal painting which is being created during the Akbar's period. और ये परंपरा आपको और ज़्यादा मजबूती से देखने को मिलती है जब आप मुगल पेंटिंग्स के और जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं. अकबर के काल में जो सबसे ज़्यादा थीम्स डिपिक्ट हुई हैं वो डिपिक्ट हुई हैं जो कोर्ट में इवेंट्स चल रहे हैं, जो कोर्ट की एक्टिविटीज़ हैं, दे आर बीइंग डिपिक्टेड. कोर्ट में शहजादे का जन्म हुआ है तो उस वक्त किस तरीके की सेरेमनीज़ हो रही हैं, शहजादे की शादी हो रही है तो किस तरीके की सेरेमनीज़ हो रही हैं, बादशाह विक्टोरियस होकर लौटा है तो व्हाट काइंड ऑफ ceremonies are being performed in the court. That is the primary concern of the painters of this period. Along with that, the portraits of the leading personalities were also being made. That is also important. कि जो उस वक्त के लोग थे, जो उस वक्त के नोबल्स थे, जो सामंत थे, जो राजा थे, उनकी पेंटिंग्स बन रही हैं. जो उनके उस वक्त के मनसबदार थे, जो जागीरदार थे, उनकी पेंटिंग्स बन रही हैं. सो वी गेट अ एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सनैलिटीज ऑफ द टाइम. एंड एज आई हैव बीन सेइंग दैट नेचुरलिज्म पे जोर है तो वेल प्रपोर्शन पेंटिंग्स आपको देखने को मिल रही है कि उनका जो रियलिस्टिक डिपिक्शन है दैट इज़ बीइंग डन. सो हमें उस वक्त के नॉट ओनली अटायर, नॉट ओनली द पर्सोना, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग डिपिक्टेड. तो जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका पोर्ट्रेट भी बन रहा है. और उस पोर्ट्रेट के बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा कि आमतौर के ऊपर बॉडी का 2/3 पार्ट जो होता था वो सामने के ऊपर फोकस करता था और आमतौर के ऊपर साइड फेस आमतौर के ऊपर डिपिक्ट किया जाता था. लेकिन देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग ऑफ द पर्सनैलिटीज बीइंग डन ड्यूरिंग दिस पीरियड. एक और चीज़ जिसको बारे में आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिसके बारे में हम लोग को बातचीत करनी ज़रूरी है, कि जो आमतौर के ऊपर पेंटिंग्स चल रही हैं उनके अंदर जो थीम्स हैं वो थीम्स सेट पैटर्न में चल रही हैं. एंड दैट इज़ वेयर द creation of extraordinary is limited in the sense that the norms are being used to depict the things, which means जो एक आइडियल सेट कर दिया गया है कि अगर बैटल का सीन है तो इस तरीके से डिपिक्ट होगा, अगर शिकार का सीन है तो इस तरीके से डिपिक्ट होगा, अगर फोर्ट को कैप्चर करने का सीन है तो दिस इज द आइडियल वे ऑफ डिपिक्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आइडियल इज बीइंग फॉलोड, दैट मॉडल इज बीइंग फॉलोड. रेयरली
the painters are deviating from that model simply because they are abiding by that model and implementing that model. And that is what I am trying to argue with you कि मुगल पेंटिंग के अंदर भी, though it is taking amalgamation of Persian and Indian tradition, experiments are also taking place, but experiments के संग जो norms, poetic norms भी हैं, जो नॉर्म्स ऑफ पेंटिंग्स हैं, वो नॉर्म्स ऑफ पेंटिंग्स आर बीइंग एडहर्ड टू, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उनको लागू किया जा रहा है, उनके बारे में सचेत रह के डिपिक्ट किया जा रहा है. विच मीन्स जो कंपोजिशंस हैं, आमतौर के ऊपर वो कंपोजिशंस फोकस करती हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो इमेजिन कर ली गई हैं इन दी मॉडल कोड ऑफ पेंटिंग्स. अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ और जहांगीर के काल के बारे में आपसे बात करूँ, देन यू रियलाइज दैट कि जहांगीर के काल में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं. एक फॉर्मलिस्टिक स्टाइल हमको देखने को मिलती है कि एक फार्मूला बन गया है कि इस तरीके से बादशाह का डिपिक्शन होगा, इस तरीके से बादशाह के कपड़ों का डिपिक्शन होगा, जिस तरीके से बादशाह रिप्रेजेंट किया जाएगा. और साथ ही साथ जो जहांगीर के समय की पेंटिंग्स हैं उनके मार्जिन्स के ऊपर बड़ी खूबसूरत चित्रकारी की जाने लग गई. विच मीन्स नॉट ओनली द पेंटिंग बट द मार्जिन्स आर वेरी ब्रॉड एंड दे वर ऑल्सो बीइंग पेंटेड हैंडसमली. विच मीन्स कि जो पेंटिंग की सेंट्रलिटी है उसको फर्दर हाईलाइट करने के लिए जो मार्जिन्स हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता था कि सेंटर पीस बिकम्स मच मोर विजिबल, मच मोर अपीरेंट इन दी प्रेजेंटेशन. तो जहांगीर के काल में ये मेजर चेंज हमको देखने को मिलता है. साथ ही साथ हमें जो पोर्ट्रेट्स बन रहे हैं उनके ऊपर भी देखने को मिलता है कि पोर्ट्रेट्स नए वाले बनते जा रहे हैं और उन पोर्ट्रेट्स के डिपिक्शन के अंदर फॉर्मुलिस्टिक स्टाइल इज बीइंग फॉलोड. जहांगीर के बारे में आप सब लोग जानते हैं वो नेचर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता था. जहांगीर वॉज वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ द नेचर. तो जहांगीर के काल में जो पेंटिंग बन रही हैं उन पेंटिंग्स के अंदर फ्लोरा और फोना का भी डिपिक्शन हमको देखने को मिलता है. अगर एक्सक्यूज मी, जो बर्ड्स उसको देख रही हैं उन बर्ड का डिपिक्शन हो रहा है, बहुत रियलिस्टिक डिपिक्शन किया जा रहा है. इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जहांगीर वॉज पैशनेट अबाउट द नेचर. जहांगीर के ज़माने में नॉट ओनली बर्ड्स बल्कि जानवरों का भी चित्रण आपको देखने को मिलता है, बहुत खूबसूरत चित्रण देखने को मिलता है. विच मीन्स जो नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन है उस नेचुरल डिपिक्शन को बहुत आसानी से वो कैप्चर कर रहे हैं. विच मीन्स जो रियलिस्टिक ट्रेडिशन की मैं बात कर रहा हूँ वो रियलिस्टिक ट्रेडिशन आपको खूबसूरती से देखने को मिल रहा है और इसको हम लोग बहुत आसानी से दिखा सकते हैं अगर हम जहांगीर के काल की पेंटिंग्स को आपके सामने रखें. मैंने दो पेंटिंग्स अभी आपके सामने रखी हैं. उन दोनों पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहांगीर के काल में जो एवियन लाइफ है, जो पक्षी है, उसका भी डिपिक्शन हो रहा है. विच मीन्स रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग कंटिन्यूज. It's not only the Mughal court which is being depicted, it is not only the Mughal nobles which is being depicted. खाली रॉयल्टी की बात नहीं हो रही है बल्कि नेचर का डिपिक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है जहांगीर की पेंटिंग के दौरान. जब हम शाहजहाँ की पेंटिंग में आते हैं, आज मैं यहीं पे अपना लेक्चर कंक्लूड भी करूँगा कि जहांगीर के जो शाहजहाँ की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं उसमें पोर्ट्रेट के ऊपर काफ़ी जोर देखने को मिलता है. क्योंकि आप सब जानते हैं कि शाहजहाँ का प्राइमरी फोकस वॉज ऑन द आर्किटेक्चर. उसने ताजमहल बनवाया और वो आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा दखल रखता है, लेकिन पेंटिंग का ट्रेडिशन शाहजहाँ के दौर में कंटिन्यू करता है और उसके अंदर पोर्ट्रेट की पेंटिंग्स बहुत साफ तौर के ऊपर ज़्यादा इमर्ज करती नज़र आती हैं. बहुत से स्टूडेंट्स उसको मिनिएचर पेंटिंग भी कहा है, लेकिन अब इसको चैलेंज किया जाए, दीज आर नॉट मिनिएचर पेंटिंग्स बिकॉज इनका साइज़ सब्सटेंशियल होता था. इनको मिनिएचर पेंटिंग के रूप में हम लोग नहीं देखते हैं. साथ ही साथ शाहजहाँ के पीरियड के अंदर हमको लव सीन्स का डिपिक्शन भी मिल रहा है. मतलब रियलिटी जो है वो कोर्टली कल्चर से निकल करके जो सोशल लाइफ है उसका डिपिक्शन में भी हमें देखने को मिलती है. मतलब हम आज जो आपसे बात कर रहे थे उस बातचीत में हम आपसे मुग़ल पीरियड में किस तरीके से पेंटिंग एक इंस्टीट्यूशनलाइज रूप में इमर्ज करती है, जो कि तस्वीर खाना रूप में एक विभाग डेवलप हो रहा है. स्पेशल डिपार्टमेंट इज बीइंग क्रिएटेड विच कैटर्स टू दी पेंटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द मुग़ल पीरियड. सो एक वो ट्रेडिशन हमको देखने को मिलता है. साथ ही साथ हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो पैन इंडियन पिक्चर्स हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मुगल्स का एम्पायर जो था हिंदुस्तान भर में फैल रहा है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नोबल्स जो हैं वो राजस्थान से भी जुड़ रहे हैं, चाहे पतन जागीरदार के रूप में जुड़ रहे हों. डेक्कन भी उनके कंट्रोल में आ रहा है, बंगाल भी उनके कंट्रोल में आ रहा है, पंजाब भी है, लाहौर भी है, बाद में दक्षिण का इलाका भी आ रहा है. तो जो मुग़ल पेंटिंग का ट्रेडिशन है वो स्प्रेड करता है अलग इलाकों के अंदर, जिसके बारे में हम लोग अपने सबसेक्वेंट लेक्चर्स के अंदर बातचीत भी करेंगे. एक ट्रेडिशन जिसके बारे में थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ, उसी से मैं अपनी बात भी ख़त्म कर रहा हूँ. हमें रागमाला का ट्रेडिशन भी देखने को मिलता है. मतलब
जो हिंदुस्तान में मौसम बदलते हैं उनके ऊपर गीत लिखे गए, उनके ऊपर राग बने हुए हैं और उन रागों का डिपिक्शन भी किया जाता है, उनको पेंटिंग में डिस्क्राइब भी किया गया है. सो वी हैव अ रिच ट्रेडिशन along with the courtly culture. We also have a popular painting tradition. So we'll be discussing that in the subsequent lecture on the paintings. Thank you very much. Hello viewers, this MA program in Environmental and Occupational Health focuses on the relationship between people and their environment and fosters safe and healthy communities, and this is of utmost importance. This program is an MA in Environmental and Occupational Health. The type of the program is a master's program and the medium of instruction will be in English. The duration of the program will be a minimum of 2 years and a maximum of 4 years. The target group will be a graduation from any discipline. Mainly the professionals working in environmental and occupational sector and non-governmental organizations are welcome to join. Doctors, nurses, paramedical graduates and employees can join the course. Employees from the Central Pollution Control Board, civil servants of the state and central governments, faculty, researchers and students in universities, research organizations and colleges will find this program very interesting. Graduates aspiring to pursue a career in environmental management, occupational health and safety, industrial health and safety will also find this program of useful relevance. The job opportunities for this program is tremendous. They can work as environmental health and safety specialist, occupational health and safety specialist in various organizations, HSE coordinator and protection officers. They can also work as worksite wellness coordinators, public administration and safety professionals. They can also work as industrial hygienists and ergonomists in the various organizations. Then the safety and environmental health managers, toxicologists, health and safety engineering specializations are also very important. The objectives of this program include the following. They will discuss the impact of the environmental hazards on human health. Then they will describe the policies, laws, standards and the measurement techniques and applications in different occupational setups. They will also help जीता है इंसान अपना जीवन रोज़ एक ढर्रे में, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है और सो जाता है। इसी प्रकार से जो है एक सामान्य सा जीवन जो है हमारा चलता रहता है। इस सामान्य से जीवन में एक स्त्री जो है वो अपनी क्या भूमिका अदा करती है। एक चुलबुली सी लड़की खेलती, हंसती, गाती, मुस्कुराती
और शादी के सिर्फ 2 साल उसे होते हैं और वो क्या है, बन जाती है एक सर्वश्रेष्ठ गृहिणी, एक कर्तव्यनिष्ठ माँ, कर्तव्यनिष्ठ पत्नी, कर्तव्यनिष्ठ बहू। और फिर वो जो है घर की 4 दीवारी के अंदर जीती है अपना एक जीवन। उसी जीवन को लेकर आगे ने एक कहानी लिखी है। कहानी, यह जो कहानी है यह है विपथगा, यानी कि एक आगे का एक कविता संग्रह है विपथगा। उसी में जो है उसी के संकलन से जो है वो ली गई है। और इस कहानी का जो है 1990 में एक किताब जो प्रकाशित हुआ इनका यह संग्रह, उसमें गे ग्रीन नाम से यह कहानी प्रकाशित हुई। और इस कहानी को बाद में आगे ने ही रोज का नाम दिया। जी हाँ, रोज, कौन सा रोज, यानी कि प्रतिदिन वाला, हर एक लम्हा जो हम जीवन का जी रहे हैं, उसी लम्हे को अपने में समेटे हुए है यह कहानी। दिखाया है आगे ने कि एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसमें जो है शादी से पहले एक बेटी की परवरिश किस तरीके से की जाती है, और शादी के बाद जो है वह एक खुशहाल जिंदगी जीने का जो उसे जो पाठ पढ़ाया जाता है, उस पाठ को लेकर वह आगे जाती है। और उसके बाद वो जो है उस जीवन को स्वीकार कर लेती है, आत्मसात कर लेती है, और अंत तक जो है उसी से जूझती रहती है। होठों की हंसी जो है वो कब उदासी में बदल जाती है, कब रोज रोज के थकान करने वाले कामों में वह अपना जीवन खपा देती है, कब उसके जीवन का अंश जो है वह समय निर्धारित होता है हर काम का। हमें कहा जाता है कि हर एक जो काम है वो समय पे करना चाहिए। समय पे काम करने से क्या है, एक घर में जो है एक सुचारूपन बना रहता है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, फिक्स एक बंधा हुआ। आज भी तो यही है। आज अगर हम बात करते हैं भारतीय समाज में, तो आज अगर हम उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो उद्योग में क्या है कि नौकरी होनी चाहिए। कैसी नौकरी? नौकरी सरकारी होनी चाहिए। सरकारी नौकरी में क्या होता है? सरकारी नौकरी में ये होता है कि इंसान की जो है नौकरी जो उसे मिल जाती है, उसके बाद जो है वह काम को वह अपने तरीके से करता है। आए तो सही, काम करे तो सही, ना करे तो सही, और फिर क्या होता है, सैलरी तो मिलती ही है ना, और उसी सैलरी में जो है इंसान अपना पूरा जीवन जो है यापन करता है। निर्धारित रहता है कि इतना ही निश्चित रूप से इतना ही पैसा आना है, इसी में जो है घर चलाना है, इस प्रकार से घर चलाना है। इसी प्रकार से जो है हमारा जो मध्यम वर्गीय समाज है, यानी कि जो हम हैं, हमारा जो अक्स है, आगे ने उसे खींचा है इस कहानी में। आप कब उठते हैं और उसके बाद उठने के बाद क्या 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 काम करते हैं, और क्या प्रतिदिन आप वही काम करते हैं? और जब प्रतिदिन आप वही काम करते हैं तो क्या आपके जीवन की जो रोचकता है, जीवन की जो खुशियां हैं, और जीवन का जो जिसे हम कहेंगे कि चहकता हुआ जीवन, आनंदमय जीवन, वास्तव में वह जीवन है क्या? इस कहानी के माध्यम से आगे ने समझाने की कोशिश की है कि एक सबसे पहले जब कहानी शुरू होती है तो कहानी किस तरीके से शुरू की है आगे ने, कि कोई आता है, घर में आता है। कौन से घर में? यानी कि बताया गया है एक ऐसा माहौल, एक ऐसा चित्र जो है आगे ने खींचा है इस कहानी में, कि आगे बताते हैं कि एक जो है एक महिला है। कौन? महिला का नाम है, पात्र का नाम क्या है? मालती। और जो है मालती और उसके पति का नाम महेश्वर है, और जो है महेश्वर और मालती की शादी होती है। पेशे में जो है महेश्वर एक डॉक्टर है, और डॉक्टर साहब जो है वो क्लिनिक जाते हैं निश्चित समय पे, 2:30 बजे उनके आने का जो है वो फिक्स है टाइम। वो आते हैं, खटखटाते हैं, मालती दरवाज़ा खोलती है, खाना खाते हैं, थोड़ा सुस्ताते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। कब? शाम के समय। 1-2 घंटा और देखना होता है मरीजों को, हॉस्पिटल है। और जो है किस चीज़ में, इसमें जो है पात्र जो है मूल रूप से मालती का भाई है, जो आता है सरकारी क्वार्टर में। यह क्वार्टर जो है कौन से हैं? ये वो क्वार्टर हैं जो किसको मिले हुए हैं? उसके पति को जो है सरकार ने दिए हैं, वहीं पे वो रहती है। आता है उस जो है मालती का भाई, और बचपन से जो है भाई से ज़्यादा वो अपने आप को क्या कहता है कि भाई कम और सखा ज़्यादा है।
सखे की तरह से, यानी कि बचपन से वो साथ पले बड़े हैं। और मालती जो है खूब शरारतें करती थी, खूब खेलती थी, बोलती थी तो चुप ही नहीं होती थी, अपना राग अलापती रहती थी, क्या क्या उसके सपने थे, क्या क्या बातें थी, और बातों ही बातों में वो सब शेयर करती थी। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे ये करना है। सारी चहक जो है वह देखता है कि आते ही मालती क्या करती है, आते ही सबसे पहले उसको जैसे ही आता है तो वो क्या कहती है कि आओ आओ, ठीक है, कैसे हो, नहीं ठीक है, एक उदासी सी चेहरे पर है। आने इतने दिन के 2 साल के बाद मिलने पे जब हम किसी अपने से मिलते हैं तो हम चहक उठते हैं और हम खुशी से झूम उठते हैं कि हाँ मेरा कोई अपना आया है, और हम जो है एक हमारी चलने की जो गति है वो तेज हो जाती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारा कोई अपना जब कई दिनों के बाद मिलता है तो मन में एक उत्साह सा रहता है, खुशी जो है चेहरे से बिना बोले झलक उठती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो हैरान होता है मालती का भाई, ये क्या वही मालती है जो इस तरीके से रहती थी? ऐसा हो क्या गया है? मनहूसियत की एक छाया सी उसे दिखाई देती है। देखता है कि एक चादर जो है वो एक ऐसी चादर ढकी हुई है सारे घर पर, जहाँ पे लग रहा है कि कुछ अहित सा, मनहूसियत सी उस घर में जो है वह छाई हुई सी लगती है। और इसमें क्या है कि एक विवाहित स्त्री जो है किस तरह से उसके आंतरिक मनोभाव का आज्ञा ने वर्णन किया है, उसके बता रहा है लेखक कि जैसे ही मालती है अच्छा, और जब देने के बाद बैठ जाती है, बैठने के बाद न उसके चेहरे पे उत्साह है, न कोई तेज है, न वह पहले वाली जो है मालती रही ही नहीं है। तो क्या मालती दुखी है? क्या उसका पति उसे सताता है? क्या वह जो है वह उसका शोषण हो रहा है? ऐसा वह सोचता है। तो नहीं तो मालती ऐसे कैसे हो गई, जबकि देखने में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। मालती का पति आता है तो मालती जो है जाती है, गेट खोलती है, खाना लगा देती है, और खाना लगाने के बाद क्या है कि फिर से वही बच्चा है बीच में, कोई बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं, कि एक अजीब तरह का जो है सन्नाटा सा जो है इस घर में लग रहा है। और मालती जो है एक मशीन की तरह से काम करती है। दिखाया है अच्छा पानी, हाँ, अरे आज को पानी ही नहीं आया, यानी कि मालती को पानी की चिंता है। आए हुए मेहमान से उसे जो है न वही पूछती है कि कब जो है कैसे आए, कब आए, क्या है, कैसे है सब घर परिवार में, कुछ नहीं। और वह हैरान हो जाता है कि ये वही मालती है जो इस तरीके से जिसके सपने, जिसके साथ मैं रहा हूँ, इतना बड़ा हुआ हूँ साथ रह के, क्या यह वही मालती है? इतना, यानी कि शादी के बाद इतना परिवर्तन कैसे आया? और एक स्त्री के मनोभाव को इसमें बताया गया है कि एक स्त्री के जो मन की जो पीड़ा है, एक मन, उसका जो जीवन है, वह कैसे जो है घर की 4 दीवारी के अंदर एक निरसता से भरा रहता है। और जो है वो सुबह के काम निपटाना, शाम के काम निपटाना, पानी की चिंता, कभी बच्चा रो रहा है, कभी बच्चे को उठा के लेके जा रही है, फिर रोता है तो उसे तुरंत जो है वो सीने से लगाती है, उसे दूध पिलाती है, और उसके बाद जो है वह फिर शाम के कामों में लग जाती है। यानी कि मध्यम वर्गीय समाज की जो नारी है वह आज भी अगर हम गौर करें तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ घर पे रहता है और क्या करता है कि हमारे भारतीय समाज में यही कहा भी जाता है कि नारी जो है या क्या यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और क्या है कि एक लड़की जो है उसके पास एक ऑप्शन होता है, उसको नौकरी पैसे वाला पति ढूंढ लिया जाता है और वह घर पे रहना ज़्यादा पसंद करती है। इसी प्रकार से मालती से पूछा, मैं तुम्हारे लिए वो किताब थी वो? तो मालती कहती, हाँ तुमने 20 पेज पढ़ने को कहा था, मैं जो है हाँ मैंने वो क्या है रोज़ जो है 20 पेज जो है फाड़ देती है। पढ़ने में उसकी कोई रुचि ही नहीं है, क्या करना है पढ़ के? यही तो हम करते हैं, यही तो सामान्यतः एक बेटी के साथ होता है। माता पिता उसे खूब नाजों से पालते हैं, पोसते हैं, और फिर उसके बाद एक ऐसा घर उसके लिए ढूंढते हैं जहाँ वह आजीवन आर्थिक रूप से जो है वह उसके ऊपर कोई आँच ना आए, वह एक अच्छा जीवन जिए। उसे घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही क्या है जब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। डॉक्टर है पति, उसके बाद बेटा हो गया, उसे पालो पोसो रहो आराम से। क्या रखा है फालतू बातों में? जी हाँ,
मध्यम वर्गीय इस मानसिकता का वर्णन आगे ने इस कहानी के माध्यम से किया है। उन्होंने कहा है कि एक रस जीवन जी रही है, एक रास्ता में जो है रोज प्रतिदिन वही काम है, वही जो है उसी समय पानी आना है, उसी समय जो है चाय बनानी है, उसी समय खाना देना है, उसी समय पति को कपड़े देने हैं, उसी समय कपड़े धोने हैं, उसी समय जो है हाँ बीच बीच में बच्चे का दिखाया है कि बच्चा जो है वह किस प्रकार से जो है कई बार जो है क्या है रो पड़ता है, क्योंकि लेखक जो है जिसका जो एक लेखक इसमें बता रहे हैं कि जो मालती का जो भाई है वह रुकने के लिए आया है और कहता है कि हाँ बिस्तर मेरा मौलिक बिस्तर लेके मेरे पीछे पीछे आ रहा है, बिस्तर जो है उसी पे मैं अपना बिस्तर में साथ लेके आया हूँ। हाँ हाँ तुमने अच्छा किया, तुम बिस्तर साथ ले आए। यहाँ पर तो जो है यानी कि चीज़ों की जब बात आ रही है तो घर में वो सारी चीज़ें भी संपन्नता से नहीं है। एक निश्चित जो सैलरी है उसके पति की, उसके आधार पे मालती एक जो है एक सामान्य सा जीवन निर्वाह कर सकती है और वह उन्हीं चीज़ों में रह के, थोड़ी सी चीज़ों में रह के ही अपना गुजर बसर जो है वो है कर रही है। और इसी सहनशीलता को जो है उसने क्या है एक समझौते का जीवन उसने अपना लिया है। ठीक है, माता पिता ने शादी कर दी, अब मेरी पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब क्या है, अब मुझे परिवार बच्चे ही तो पालने हैं। यही तो कहा जाता है महिलाओं को कि तुम जो है बच्चे पालो, तुम्हें जो है नौकरी की ज़रूरत क्या है। आज भी जब हम देखते हैं तो सामान्यतः क्या कहा जाता है कि तुम रहो, घर पे रहो, आराम से रहो, वही महिला अच्छी है जो जिसका जो है पति अच्छा कमाता है और वो जो है घर में अच्छे तरीके से अपना सुरक्षित रहो। तुम्हें उद्योग धंधे करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें रोजगार करने की क्या ज़रूरत है। एक ऐसी मानसिकता जो है उस समय जो 1990 की जो बात है जब ये कहानी का संकलन प्रकाशित हुआ था, आज तो काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन भी हुआ है और चीज़ें बदली भी हैं और बदल भी रही हैं। लेकिन आज भी एक ऐसा वर्ग हमारे समाज में है जो इस चीज़ को जो है वो पूर्णतया जो है इस चीज़ का पक्षधर है कि लड़की के लिए ज़रूरी नहीं है कि लड़की जो है वो है नौकरी करे। लड़की के लिए तो कमाने वाला लड़का मिल ही जाता है और वही जो है वह उसको आराम से बैठ के खिलाएगा। यानी कि हम क्या बना रहे हैं अपनी बेटियों को, हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत। एक तरफ जहाँ स्त्री पुरुष समानता का डंका पिटता है, एक तरफ जहाँ पे लोग स्त्री पुरुष समानता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग भी हमारे समाज में है जो इस चीज़ को का जो है परिचायक है और इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से अपनाता है और कहता है कि लड़की को जो है उसके लिए एक अच्छा अमीर परिवार ढूंढ दीजिए। जितना पैसा आप उसकी पढ़ाई में लगा रहे हैं, जितने करोड़ों लगा रहे हैं, उससे उतना पैसा आप उसके दहेज में लगाइए और क्या है उसकी शादी अच्छे घर में कर दीजिए, बांध दीजिए उसे। और जो है उसकी जो प्रतिभा है उसको किस में लगाना है, परिवार पालने में और जो है घर को संभालने में। और फिर लड़कियां भी सामान्यतः जब बचपन से उन्हें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उस समझौते को वो अपना लेती हैं और जो है परिस्थिति और उसके प्रभाव में जो है ढलते हुए इसमें क्या है गृहिणी के चरित्र को बताया गया है कि हमारे भारतीय समाज में सामान्यतः गृहिणियां ऐसा ही करती हैं, ऐसा ही किया जाता है। और यह जो ढल रहा है अंत में जाकर जो है मालती के पति आते हैं और उनके भाई से बात करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक बातें चलती हैं और बातें चलते चलते क्या होता है कि इसमें जो है वो उसका जो है बच्चा जो है वो गिर जाता है बच्चा, तो बच्चे को चोट लगती है। तो क्या कहती है मालती, मैंने जाना कि वह क्या है मिथ्या नहीं है, मैंने देखा सचमुच उस कुटुंब में कोई भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही जो है उसके जीवन से पहले ही उसके यौवन को घुन लग गया है, किसे पहचानता ही नहीं। यह क्या परिधि से घिरी उसे चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख लिया है। मालती जो एक स्वस्थ और एक अच्छी और जो है हेल्थ वाली लड़की थी, वह क्या है एकदम कमज़ोर सी हो गई है। एक कमज़ोर छाया की तरह से जो है मालती लग रही है और जो है उसने इस छोटे से घरौंदे को ही अपनी पूरी दुनिया उसने बना लिया है। मैं उसके जाते हुए उसके दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया इस घर पर आ गई है। यानी कि एक मनहूसियत की एक ऐसी छाया, एक ऐसा पल पल रोज का एक प्रतिदिन एक जैसा रूटीन, एक जैसी चीजें, कुछ भी बदलाव नहीं। और उस बदलाव के न चलते चलते ऐसी आदत हो जाती है कि वही हम उसको आत्मसात कर लेते हैं।
छुपी हुई जो प्रतिभा है, जो पढ़ना, जो व्यक्ति का यानी कि एक लड़की का जो टैलेंट है, जो उसकी प्रतिभा है, वह दब कर रह जाती है। उसके लिए सब कुछ उसका घर और परिवार का एक दायरा बना दिया जाता है। इस मानसिकता का वर्णन आगे यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसे ही बच्चा गिरता है तो क्या है, माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। मालती ने रोते हुए शिशु को क्या है लेते हुए कहती है, मालती, रोज ही तो यही होता है, ऐसी चोटें रोज लगती रहती हैं। एक बच्चा 8-10 महीने का, 2 साल का, 1-1.5-2 साल का बच्चा है, 2 साल का तो बच्चा है भी नहीं, तो यानी कि 8-9 महीने का बच्चा, क्या नाम है बच्चे का, बच्चा टीटू, टीटू करा रहा है, गिरता है, गिरते, अरे छोड़ो क्या है, रोज लगती रहती है ऐसी छोटी छोटी मोटी। यानी कि जब बच्चे को चोट लगती है, सामान्यतः हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे को चोट लगती है, माँ का कलेजा हाथ में आ जाता है, और वह जो है बच्चे को एकदम से उसके चेहरे के जो भाव बदल जाते हैं। अगर सामान्य है, अगर सामान्य माँ है, अगर सामान्य उसका व्यवहार है और वास्तव में वह जीवित है, अंतर से अगर वह जीवित है, तो बच्चे को चोट लगते ही वह अंतर से कुहल उठती है और एकदम से छटपटा जाती है। लेकिन यहाँ पे एक निरस्ता दिखाई आगे ने, कोई नहीं, लग गई चोट, रोज ही तो लगती रहती है, क्या फर्क पड़ता है, रोज लगती है। यानी कि कौन सी कुंठा है मालती के चरित्र में, यहाँ कौन सी कुंठा है उस लड़की के जीवन में जिसे वो व्यक्त नहीं कर पा रही है। यानी कि एक सपने देखता है एक इंसान, और जैसे ही उसके सपनों पर कुठारघात होता है तो वह एकदम से ढुलमुल सा हो जाता है, एकदम से निर्जीव सा महसूस करने लगता है। चाह के भी जो है उसका जो है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बाहर निकल ही नहीं पाता है, और बार बार उसे कहा जाता है कि तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो, और वह इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि मैं यही हूँ, और फिर वह उसी तरीके का जीवन जीता है। क्या कहती हैं प्रभा खेतान, क्या कहती हैं कि मुझे बार बार ढीठ कहा जाने लगा। जब मैं डॉक्टर साहब के रहती, मुझे पता था कि मुझे समाज में जो है किस दृष्टि से देखा जाता है, उसके बाद मैं ढीठ हो गई। कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक समय के बाद क्या कहा जाता है कि सहनशीलता को क्या है, एक कायरता का रूप धारण कर लेती है सहनशीलता। सहते रहिए, कुछ मत बोलिए, और फिर आप जो है आप उसी कुएं के जो कहेंगे कुपमंडकू बन जाते हैं, जब तक कोई आपसे बाहर आपको आपकी चेतना को जागृत नहीं करता है। यह एक निर्जीव सी महिला की कहानी है। भारतीय समाज में ऐसी बहुत सी निर्जीव सी महिलाएं हमारे आसपास हैं। यह कहानी आज इस वजह से प्रासंगिक है कि आज भी हम देख रहे हैं कि एक ढर्रा जो हमारे समाज ने बनाया है, भारतीय समाज में जो एक देखा जाता है कि नारी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी जगह क्या है, उसका घर है, उसकी गृहस्थी है, और उससे बढ़कर उसमें कुछ नहीं है। और अगर हम देखते हैं आज का जो लेखन है, उसमें महिलाएं अपनी बातें भी रख रही हैं। उसमें चाहे मनु भंडारी हो, चाहे रमणिका गुप्ता हो, चाहे कृष्णा अग्निहोत्री हो, चाहे प्रभा खेतान हो, चाहे मैत्रेयी पुष्पा हो, चाहे कौशल्या बैसंत्री हो, चाहे सुशीला टागभोरे हो, चाहे सुशीला राय हो। कितनी ही लेखिकाएं जो हैं वह अपने जीवन के माध्यम से अपने जीवन के सत्य को उद्घाटित कर चुकी हैं। क्या कहती है कौशल्या बैसंत्री कि जैसे जहाँ जहाँ पे मैं जाती, जहाँ जहाँ पर लोगों को मुझसे मिलते, तो जहाँ मुझे एहसास कराया जाता कि मैं जो है एक घर की 4 दीवारी में रहने वाली एक ऐसी महिला हूँ जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है। और उसी में क्या है, एक बार कहती है कि अंत समय में ऐसा आता है कि मेरे पति जो हैं वो पैसे देने बंद कर देते हैं, यानी कि साबुन, शैम्पू, ये सारी जो मेरी मूलभूत आवश्यकताएं भी जो हैं वो भी क्या है, फिर बच्चे भेजना शुरू करते हैं। कैसा है एक नारी का जीवन, क्या वह उस घर में, जिस घर में वह, अगर हम बात करते हैं बहुत सी जो कहानियाँ अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य में जो लेखकों ने लिखी हैं, उसमें बहुत से ऐसे नारी पात्र हमें दिखाई देते हैं। अगर आप चीफ की दावत कहानी को लीजिए, भीष्म साहनी ने एक ऐसी नारी का चित्र खींचा है कि वह अपने घर में जिस बच्चे के लिए वह गहने तक बेच देती है, उसके बाद वह अपने घर में भी जो है एक निरीह की तरह से रहने को मजबूर हो जाती है। अंतिम समय में जो है जैसे उसका बॉस जब आता है तो माँ को जब लगता है कि माँ उसके प्रमोशन का कारण बन रहा है, तब माँ को जो है इज्जत देता, हाँ माँ तुम करो ना, हाँ माँ तुम करो ना, वरना क्या है
माँ एक अन्यथा वस्तु है, माँ को एक कोने में रखा हुआ है। माँ, उनको लगता है कि कहीं माँ को लोग देख ना लें। बूढ़े माँ बाप हमारे लिए क्या है? बूढ़े माँ बाप जो हैं वो हमारे लिए क्या बन गए हैं? बूढ़े माँ बाप जो है हम उनको बोझ समझने लगे हैं। और जो है एक नारी जो हर पल खट खट के, यानी कि अपने जीवन, पूरा जीवन जो परिवार के नाम समर्पित कर देती है, कि जहाँ पे भी अपने बच्चों को ज़रूरतें पड़ती हैं, पूरा अपना स्वयं का वजूद त्याग कर वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी को खींचती है और अंत में उसे लानतें मिलती हैं। यह जो है एक ऐसी एक सोच, ऐसी एक मानसिकता है जिससे बाहर आगे लाना चाहते हैं। कुंठाओं से भरी हुई महिलाएं क्यों हमारे समाज में हैं? क्यों जो है ऐसे में जो है अजीब तरह की बीमारियां जो आज हम सुनने को मिलती हैं वो महिलाओं में ज़्यादा होती हैं? इसके पीछे क्या क्या कारण है? क्यों एक हंसती खेलती चुलबुलाती हुई लड़की 2 साल के अंदर जो है वो दुर्बल काया का रूप धारण कर लेती है? यानी कि एक सोच में परिवर्तन की तरफ जो है आगे अग्रसर हमें कर रहे हैं। क्या है? वह कहना चाहते हैं कि जो है कहना चाहते हैं कि यह जो ढर्रा हमने बनाया है ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। क्या कहता है इस कहानी में जो है लेखक ने? अंत में क्या है, बैठी है मालती और जो है पति है, जा रहे हैं और फिर वह कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा, यही सारी चीज़ें जो हैं, हाँ, कुछ भी खुलकर नहीं बता रही है मालती। और मैं समझ जाता हूँ कि इसने उस ढर्रे को अपना लिया है जो इसके लिए एक तैयार किया गया खाका है, जो सांचा इसके लिए बनाया गया है, उसी में इसने एक आदर्श नारी का रूप धारण करते हुए अपने आप को इसमें समाहित इसने कर लिया है। तो प्रतिदिन जो है परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक ऐसी गृहिणी की यह कहानी है जिसमें उदासी, चिड़चिड़ापन और अकेलापन, मध्यम वर्ग की पारिवारिक एक रिश्ता को बहुत ही जो है मार्मिकता के साथ इस कहानी में दिखाया गया है। आप जिए अपना जीवन और जो है इसी एक ढांचे में रहिए और मर खप जाइए। यानी कि आज हमारे देश में जो है ऐसा एक स्त्री का एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है जो कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। आज भले ही परिवर्तन हो रहे हैं, भले ही महिला आत्मनिर्भर बन रही हैं, भले ही बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया है और जो वहाँ पे जब हम बेटा बेटी की जब हम बात करते हैं तो समानता की भी बात होती है। और इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि आज का जो समय है वह पहले से काफ़ी बेहतर बनता जा रहा है। और इस बेहतर समय में जो है हम एक ऐसे समाज की संकल्पना हम कर सकते हैं जिसमें नारी को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके भावों को, उसके मनोभावों को और उसके मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। तो यह कहानी जो है भारतीय समाज की नारी की वो कहानी है जो लगभग हमें हर घर में दिखाई देती है। तो यह आगे इस कहानी रोज के माध्यम से रोज के बदलाव की बात करते हैं। वह चाहते हैं कि नारी का जो अक्स इतने दिनों से जो हमने जो खींचा है चित्र उससे उसे बाहर निकाला जाए, एक नया जो है प्रयास किया जाए बदलाव का। और वह प्रयास काफ़ी हद तक हो भी रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो इतनी सी थी यह कहानी। भैरवी करे भैरवी हाँ भैरवी